मुझे हमेशा उड़ते परिंदे बड़े पसंद आते हैं and I have this feeling that you give me the wings to fly. And now I think मेरी boundaries जो मैंने बनाई हुई थी, जो limitations मैंने बनाई हुई थी, I can't see them now. जो beliefs जो चीजें रोकती थी limited, they just go tish नहीं no more अपने confidence के अंदर एक बहुत ज़्यादा boost देख रहा हूँ. और यूनिकनेस कमरान भाई की ट्रेनिंग्स में है वो ये है कि व्हेन यू गो थ्रू दिस ट्रेनिंग्स ड्यूरिंग द ट्रेनिंग्स ही आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है. It's that profession that gives you the ability to help people transform their lives. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. आई होप आप मुझको देख सकते हैं और मुझको सुन सकते हैं. एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑन बी माय गेस्ट. आज मेरे साथ जो मेरी गेस्ट हैं, मेरे पास आई ट्रेन थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लेकिन आई हैव नॉट हैड मेनी पीपल जो पूरी की पूरी फैमिलीज मेरे पास आई हों. आज से मेरे ख्याल से 2016 की शायद बात है. मेरे पास डॉक्टर सईद आल आए एंड असलम सईद, और उन्होंने मेरे पास कुछ ट्रेनिंग्स करी हैं. उन्होंने ट्रेनिंग के बाद he sent his daughter, he brought his wife, he sent his son. It's like, so I have the pleasure of working with the whole family. So उस फैमिली में जो खातून मेरे पास आई, लड़की मेरे पास आई, जिनसे अभी थोड़ी देर में आपकी मुलाकात होगी. So when she came to me, she did, I think, पहली training जो उन्होंने मेरे पास की थी, that was an NLP practitioner training and then master practitioner training. She complained about having an allergy about something, and then we worked on this, and alhamdulillah, it helped her. So you will hear about that story as well. So Ikhlas is an engineer by profession. She is a teacher. She's a corporate trainer. She's a consultant. She works with people, and whatever else she does, वो इखलास आपको बताएंगी इंशाल्लाह ताला. So इखलास, welcome to the program. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह. क्या हाल है आपके? Alhamdulillah, sir. I'm good. Thank you so much for inviting me in your Be My Guest. It fascinated me a lot, and being your guest feels really, I feel very privileged. Thank you so much. My pleasure, इखलास. इखलास, I know you, लेकिन हमारी ऑडियंस आपको नहीं जानती है. So starting from आप कहाँ पर हैं, and आपका background, आपका educational background, and what you do, all the trainings you do, the kinds of trainings you do. So just please introduce yourself. Okay. Assalamu alaikum, everyone. I'm Ikhlas Fahad. If I talk about my educational background, so I did my bachelor's in mechanical engineering from NED University back in 2014. After I had the chance of working in a very well-reputed firm back then. Later on, after completing my graduation, I was enrolled with Sir Kamran Sultan for my first training. That was NLP practitioner training. And just say, like Sir told, that it was my father. I gave him 100% credit of this, of introducing me to such a person who is also my mentor, and I look up to him for every. I actually bother him a lot with a lot of questions whenever I have. So back then, I was enrolled in NLP practitioner training, and then I did my NLP master practitioner training with Sir. I also did my public speaking training with Sir, and then I started working as a facilitator for PRISM. PRISM is an acronym, stands for Personal, Intellectual, Social, and Moral Development of students, and that is a unique area of AKESP, that is Arkan Education Service Pakistan. So I started working there as a facilitator, and then I joined their English department as their lecturer for English. And I would say that during my entire tenure at Arkan Higher Secondary School, Karachi, it was neuro-linguistic programming, NLP, that helped me a lot.
that I would give the credit of getting Outstanding Teachers Award in a consecutive for consecutive 2 years. And that was only because of the NLP techniques that I introduced in my classes, introduced to my students, and I actually applied those strategies to my students. And the result was awesome. I mean, I wouldn't only talk about the academic result, but apart from that, I had excellent rapport with my students. My classes were fun, and that is how I actually earned Outstanding Teachers Award consecutively for my entire tenure. So I worked there, and then later on in 2018, my son was born, and I had to look after him. So I quit my job, though I loved it a lot, but I had to. I loved my son more. And then in 2019, the idea was always there to introduce NLP into the teaching and learning pedagogies, especially in Pakistan, because this is something that is lacking a bit. So I had my own institution registered, that is Renaissance School of Languages. And another uniqueness that I would like to share here, because prior to COVID, the idea of online teaching and learning was comparatively very new in Pakistan, in our culture. Still, it's a bit, it's not that much, I would say, conventional, but back then it was something that was quite not acceptable. But I would say that being an NLP master practitioner, I have always understood this fact that, like sir always say, that there is not only one way of doing anything, there are multiple ways. So my goal was to do something productive, especially in the teaching and learning sector, in the training part. So that is why I started working online, because obviously I had to look after my son, I had to manage the family, and I wanted to do something productive as well. So the idea of online teaching was there, and fortunately, miraculously, after COVID, the idea was widespread. So I started teaching English online, not only not only conventional English, but I started working with corporate in the corporate sector of Pakistan too, with their business communication trainings, and the trainings for their sales professional, but that is also linked to the English part. And then some other trainings with some other I would say the healthcare sector of Pakistan, especially in Karachi. And all of my trainings in the either in the corporate sector, or if I'm working individually with my students, teaching them business English or academic English. So that is also something that is integrated with NLP. And apart from that, I am also an IELTS trainer. So when I'm teaching my IELTS students, so that is also, again, the uniqueness is that I also, again, I integrate NLP techniques into my IELTS teaching when I'm dealing with my students, because again, they are too much under stress, and they have a lot of pressure on them, because they have to achieve their desired bands, and everybody around them is I would say people are actually happy to scare them off IELTS, that it's too difficult and you won't get bands and stuff. So yes, there are a lot of techniques that we can, obviously share with you. So this is, this is a brief introduction of what I do. Thank you very much, Ikhlas. Ikhlas, a few things about, like, since you are integrating NLP in your teaching, some experiences, maybe some ideas, so people can get a better understanding of how you integrate NLP and where you do it. Okay. Sir, if I talk about my tenure at AKSP, so I remember the time when I was told by my principal back then. She asked me to join the English department. I was doing my master's in English from Karachi University then as well. So she asked me to join the English department, and I remember I told her that I'm not going to take
BIK, that is Board of Intermediate Education, Karachi. Rather, because their curriculum is very rigid, and it's all about rote learning and stuff, right? So I actually requested her that if you want to induct me, I would really want to go for the Khan board, because they again work on the skills, the receptive and the productive skills of the language, that is listening, reading, writing, and speaking. Then being I consider myself an NLP practitioner 24/7. I have to. It's like it's a huge responsibility that is on my shoulders. And even if I forget, so it's my husband who is always poking me. I mean, sometimes it's like, okay, I also want to act in a conventional manner, in a traditional way. But then he is the one who is always telling me that you are the NLP practitioner. Okay, keep that in mind. You can't act in that way. So as a language facilitator there, the very first thing that I think that teachers should do, and I always did that, it was creating rapport with your students. For example, if I enter into my classroom, right, and obviously it's not always the first unit of the day, it's not always the first lesson of the day. Students are also tired, and even if it's the first lesson, sometimes they're very sleepy too, right? And if it's not, they have had other units too. So if I just enter into the classroom and I ask them that, okay, it's time to let's do this activity, or let's go for the grammar part, or let's start with listening, so they will still be disengaged. And this is something that I've observed a lot with because we had this practice of observing each other's classrooms for our professional development. So this is something that is very common. So students are disengaged, and if they are disengaged, it's very probable that they will remain disengaged for the entire time, like 30 minutes or 45 minutes, right? So the very first thing that I prefer is to anchoring as well. Like I used to have some kind of, it's a bit of a music or something like that to indicate that it is the time for the class. So the class is about to start. Or otherwise, a very easy practice that we can do is, we can just I used to switch from different to different practices. So the very easy thing for teachers is that they can just stand at the doors of their class, and if it's a unit after break, so when the students are coming inside, so they can just greet at each one, and they can have a bit of a chit chat with them to make them feel comfortable and cozy. Because again, like in NLP, we are taught that unconscious mind, it wants to feel safe, right? So, but learning is outside the comfort zone, right? So but again, we have to make them feel safe first. So, or what teachers can do, what I practiced was that if my students are already settled, but obviously they had some math unit or physics unit prior to my unit, so I would just roam around in the class for 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. So, or I would ask them to change their places, so they would feel a bit active and they have their vision a bit broad. So, and then I would have some kind of a very normal talk with them. How are you? Which was the unit prior to that, or anything, whatever, for maybe 5 minutes, 10 minutes. So, you get them engaged, and you get, and it's like, pacing and leading technique, right? So I pace them and then lead them into what I want to teach them. So this is something that is, these are some of the practices. And then teachers can also use, in classes, it's very easy to use visual anchors, to use auditory anchors, and it's very easy for teachers to use special anchors too. Because again, teachers have some specific, but we just have to make sure that students do not already have some negative feelings attached to that particular place where you are standing. But these are the kind of things that you can do. And then you can what I did was to elicit have them access to the good resources inside, to the happier part of themselves. If they can feel gloomy, so they can also
feel good, and they can all generate the stimulus themselves. So like we did in our NLP practitioner and master practitioner training. So again, apart from that, it's very important that teachers do that first by themselves. I mean, if I just entered into the classroom with a very sad face and I'm very tired, obviously I can't be energetic all the time. Like we had sometimes I had there were 5 units and I had all the units the entire day. So, and again that we had engineering, we had medical, we had commerce. So with the medical classes, they are very obedient. But with engineering, I also have an engineering background, so I understand the kind of students they are very energetic. And in commerce, they are too much energetic, right? So if I presuppose it negatively, like I heard a lot of colleagues of mine trying to scare us out that commerce classes are something that you can't handle. No, that is not the case. I mean, why am I presupposing all the negative already? So I had to change my own state, choose success ahead of time. And then when I would enter into the class in an energetic manner, so the feelings would replicate. And then obviously I can demand my students to perform in the similar manner, like I want them to. These are, and obviously the similar manner, this is something that I do when I am either in my corporate trainings or online. So, I have to access that state myself first, and then I can obviously make them access that state. Excellent. This is so much, it's like वो लोग जिनके लिए ये चीजें बिल्कुल नई हैं, जो अभी इखलास ने जितनी बातें की हैं. Let me just quickly sum it up for you. जो इखलास के लिए like pacing and leading, कि जब आप कोई भी मीटिंग स्टार्ट करें, क्लास स्टार्ट करें, आपने ये देखना होता है कि आपके स्टूडेंट्स अभी कहाँ पर हैं, यानी मेंटली वो कहाँ पर है. यूं समझिए कि अगर आपके घर कोई पहली बार आ रहा है और वो रास्ते में है, तो आप पहले उसको ये आपसे वो कॉल करके रास्ते में पूछता है कि जी मैं आपके घर का रास्ता मुझे बता दीजिए, तो आपको पहले जानने की जरूरत है कि वो कहाँ है. तो इखलास जो भी बात कर रही है, सो शी इज डूइंग दैट, शी इज फाइंडिंग कि अभी स्टूडेंट है कहाँ, मेंटली वो कहाँ पर है. और उसके बाद फिर जब आपको ये पता चलता है वो कहाँ है, तो फिर आप उसको अपने सब्जेक्ट की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ उसमें ला सकते हैं. बिकॉज अगर वो मेंटली अपने दिमाग में कल का क्रिकेट मैच देख रहा है, ओके, या आने वाला क्रिकेट मैच देख रहा है, और उस वक्त आप उसको पढ़ा रहे हैं, तो आपका पढ़ाना सारा बेकार हो जाएगा, आपकी सारी मेहनत जाया हो जाएगी. सो यू हैव टू ब्रिंग देम इनटू. सो इसी तरह जो इखलास ने बात करी कि दरवाजे के आगे खड़े होकर लोग स्टूडेंट्स को ग्रीट करना, दैट्स अ वेरी पावरफुल टेक्निक. इन एनी वे यू हैव टू मेक दैट कनेक्शन. दिस इज व्हाट इखलास इज टॉकिंग अबाउट. द अदर थिंग दैट इखलास मेंशन्ड इज के खुद अपनी एक अच्छी जहन की कैफियत में, अगर हम खुद खराब मूड में हो, यानी हमारा मूड अपना खराब होगा टीचर का, तो फिर हम अपने स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाएंगे. सो इसलिए हमें अपने मूड पे भी काम करना होता है. दिस इज व्हाट इखलास वाज टॉकिंग अबाउट. सो थैंक यू वेरी मच इखलास फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ दिस. इखलास, यू आल्सो डू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स एंड आपने सेल्स की एंड कम्युनिकेशन की, फार्मास्यूटिकल्स में भी आपने ट्रेनिंग्स कराई. सो हाउ इज दैट एक्सपीरियंस कंपेयर्ड टू टीचिंग इन योर कॉलेज, एंड लाइक व्हाट्स द डिफरेंस डिड यू नोटिस? Okay, thank you, sir. It's a very good question. The difference is too much. I mean, when you are dealing with the students, they in a manner they want to get pampered. No matter, I mean, either they are in their high schools or they are in their, I mean, grade 8 or 9 students, they want to be pampered. But in the corporate sector, obviously, in the normal educational sector, students do have a lot of time, right? But when you are dealing in the corporate sector, the environment is entirely different. I would say I found people, alhamdulillah, very sophisticated, and they are very much into the teaching and they are very much into the professional development process. So far, my experience with them is very good. Though I had to conduct a very different kind of training in a very renowned hospital of Karachi, and that was for their that was a work ethics training for their ancillary staff. So even then, I would say that their response to the training was very good. Again, I would say
one of the reasons, I mean, after obviously after the grace of Allah, it was again because I was able to choose success ahead of time. I imagined that training to go super well. So obviously my mind was able to access those feelings, access the states and act accordingly to produce the desired results. So in the corporate sector of Pakistan, there you have to be very technologically advanced too, because they are not the students, right? They are the corporators. And again, I would say repo is something that is is a very, very powerful technique, because once you are able to make rapport with them, it's very easy to make them understand your point of view. For example, the business communication proficiency training that I conducted, it was a very long training. It lasted for the entire 3 months. So for those 3 months, I was told to make them learn to write proper formal emails, and to I mean, it was more of a written part. I had included some of the speaking part into that, but they were more focused on the written communication. So integrating NLP into the written communication, because obviously when you are writing emails to your clients, this is something that can be taken positive, that can be taken negative. So that was again something, it was again a very unique experience, but it was something very good. And once I was able to, Alhamdulillah, make rapport with them in the very initial classes, the training went very well. The response was very good. And I would say that I feel really happy, because the people over there, they were very, very much senior than me. I mean, they had some had the least experience. People had the experience of 20 years. So you can imagine, I mean, and they were into the sales and marketing. So when I was there working with their the manager of learning and development, so he told me that you are going to work with the sales and marketing team, and he said marketing wale jo hai na wo uda ke rakh dete. And I just smiled and I said, okay, let's see. So I remember there was another person as well. I don't remember the name. He came and he said he was there for the trainings too, and he said, "Oh, okay, some stuff of NLP. No, ये कर लेंगी, ये हो जाएगा. आप इनको हल्का ले रहे." तो बहुत अच्छा रहा. It was very good, काफी. And the important part is that we were able to achieve the desired targets. Again, उसमें एक चीज जो another technique that we worked on, because it was sales and marketing. So something that was very unique for them was if you remember, you told us how the mind of people works, the benefit and the loss statements. Like, for example, some people do things to gain the benefit, and some people do things to avoid the loss. I mean, or apparently they are the similar things, but there is a very small difference जिसमें जो है वो जिस तरह से आपका माइंड काम कर रहा होता है. तो उनके लिए ये चीज बहुत यूनिक थी. पूरी ट्रेनिंग में उनके लिए सबसे यूनिक पार्ट ये था कि अच्छा, मतलब समटाइम्स जो है, और लोग जो है वो इसलिए चीजें खरीद लेते हैं हमसे क्योंकि वो जैसे अगर एक मेडिसिन की बात करूं तो समटाइम्स जो है वो इसलिए खरीद लेते हैं कि वो हेल्दी रहना चाहते हैं, और अदर्स जो है वो इसलिए खरीद लेते हैं कि वो बीमार नहीं होना चाहते. ये वाली चीज जो है ना, ये बहुत यूनिक थी. अनदर unique thing for them was because their team, the sales and marketing team, had to visit the doctors. So for them it was the VAK, जो हमारा NLP का बहुत basic element है, yet very, very powerful, that visual, auditory, kinesthetic, and how people are the language pattern. So जो कुछ चीजें होती हैं कि if you have to you have to match their tone and their body language and इस तरह की जो थोड़ी बहुत चीजें होती हैं, तो then they were able to understand कि कुछ डॉक्टर्स के साथ उनकी रिपोर्ट बहुत अच्छी हो जाती है और कुछ के साथ वो नहीं हो पाती. तो कुछ एलिमेंट्स जो थे वो हमने वहां पे एक्सप्लोर किए थे. Excellent. इखलास ने जो भी बातें की हैं, इसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है इखलास ने शेयर की है, एंड दैट इज बिफोर द प्रोग्राम she imagined herself successful. कि
हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन इशू होता है, आई वर्क विद अ नंबर ऑफ पीपल विद दिस इशू, एंड दैट इशू इज परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। ओके, बच्चों में एग्जाम की एंग्जाइटी होती है, एग्जाम आ रहा है उसकी एंग्जाइटी है, कोई इंटरव्यू आ रहा है उसकी एंग्जाइटी है, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसकी एंग्जाइटी है, पता चला कहीं प्रेजेंटेशन देनी है उसकी एंग्जाइटी है। और उस एंग्जाइटी में, उस एंक्शसनेस में लोग अपने दिमाग में चीजें खराब होती हुई देखना शुरू कर देते हैं। ये खराब हो जाएगा, मेरा इंटरव्यू खराब हो जाएगा, एग्जाम में मैं फेल हो जाऊंगा, पब्लिक स्पीकिंग में जाऊंगा तो भूल जाऊंगा, एंड दे स्टार्ट सीइंग दोस काइंड ऑफ थिंग्स, एंड व्हाट दे डोंट नो is that's when they are programming themselves. Unfortunately, they are programming themselves negatively. और जब वो नेगेटिव प्रोग्राम्स जो उन्होंने अपने जहन में किए होते हैं, जब वो मैनिफेस्ट होते हैं उनके बिहेवियर में, उनके एक्शंस में और उनके रिजल्ट्स पे, तो भी मैंने देखा है बहुत सारे लोग बजाय अपने आप को दुरुस्त करने के, वो इस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि वो ये साबित करें कि देखा, मैंने जैसा कहा था वैसा ही हो गया, जो मैंने सोचा था वही हो गया। ओके, लाइक अगर आपको पता था चीजें खराब हो जाएंगी, व्हाई डिडंट यू डू समथिंग अबाउट इट? अगर आपको पता था चीजें खराब हो जाएंगी, तो व्हाई डिडंट यू वर्क ऑन इट टू मेक थिंग्स बेटर? ओके, सो जो इखलास ने बात की है, यू विजुअलाइज सक्सेस, ऑलवेज सी योरसेल्फ द एंड रिजल्ट, कि आपने एट द एंड ऑफ योर प्रेजेंटेशन, एट द एंड ऑफ योर ट्रेनिंग, एट द एंड ऑफ योर क्लास, व्हाट डू यू वांट टू हैव हैपन? ओके, एट द एंड ऑफ an इंटरव्यू जिसके लिए आप जा रहे हैं, एग्जाम के लिए आप जा रहे हैं, सो दैट इज हाउ यू गिव योर ब्रेन अ डायरेक्शन. Now, just visualizing, by the way, will not cause you to succeed. So if you're going for an exam, in addition to visualizing, you have to study. Okay, for your interview you have to prepare, for your presentation you have to prepare. बस उस प्रिपरेशन के दो पार्ट्स है, एक प्रिपरेशन है जो आप फिजिकली एक्शंस के थ्रू कर रहे हैं, एक वो प्रिपरेशन है जो आप मेंटली कर रहे हैं, जिसका इखलास ने यहाँ पे अभी जिक्र किया, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, that's where a lot of people miss. You do this in everything in your life. Okay, Ikhlas ने एक बात बड़ी प्यारी बोली. It's like she's 24/7 NLP. She's not a practitioner. She's a master practitioner. Okay, and so Fahad, she's a master practitioner. Okay, not a practitioner. Okay, so एक चीज ये बहुत कॉमन होती है. मैं अपनी क्लासेस के एंड में अपने स्टूडेंट्स को एक चीज ये बताता रहता हूँ कि देखो, जब आप यहाँ से क्लास के बाद आप जाओगे ना, आपने ट्रेनिंग की है, उन लोगों ने जो आपके घर वाले उन्होंने नहीं किया. ओके, मगर बिकॉज दे डोंट नो, they will start doing these kind of things. I've heard that myself many times. अपने आप को तो देखो. Okay, because NLP doesn't make you perfect. Okay, nobody is perfect. I'm not perfect. Okay, I make more mistakes than all of my students combined. Okay? I have more faults in me than all of you who are watching me right now. लेकिन that's not the idea. You don't become perfect. You keep on getting better and better. Okay, so thank you for sharing all of that. Ikhlas, I remember जब आप मेरे master practitioner training में आए थे, we did some work on an allergy. You had this allergy. धुएं का आपको शायद allergy थी. Okay, how is it, by the way? Can you share some of that experience? क्या हुआ था? यस, अब तो इनफैक्ट मुझे रियलाइज भी नहीं होता है कि मैं किसी धुएं वाली जगह से गुजर रही हूँ. दैट वाज अ वेरी बिग इशू फॉर मी इन ड्यूरिंग माय यूनिवर्सिटी लाइफ, बिकॉज हम यूनिवर्सिटी में थे तो ऑब्वियसली हम ट्रैवल कर रहे होते थे. बस से भी ट्रैवल किया है, चिंचीज में भी ट्रैवल किया है, तो गाड़ी में भी ट्रैवल किया. तो मेरे साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो आता था, दैट मुझे पता ही नहीं, जब गाड़ी का धुआं हो रहा होता था तो मेरे सर में शदीद दर्द शुरू हो जाता था, उससे मुझे नौजिया होने लगता था. जो मेरा पूरा दिन था ना वो बिल्कुल वेस्ट हो जाता था, क्योंकि सुबह के टाइम इस तरह से नहीं होता था. बट ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी से जो वापसी का टाइम होता है उस टाइम पे ट्रैफिक भी ज्यादा होता है, कंजेशन ट्रैफिक की काफी होती है. तो वो बहुत बड़ा एक इशू था मेरे लिए, क्योंकि मुझे डेली बेसिस पे जो है ना वो उससे कभी उल्टी आ रही है, कभी चक्कर आ रहे हैं, कभी सर में दर्द हो रहा है. तो अब तो मुझे ऑनेस्टली याद भी नहीं है कि ऐसा कुछ होता था. तो जब हम क्लास में कर रहे थे तो सर ने पूछा था कि किसी को कोई कुछ कोई इस तरह की चीज है जिसको वो खत्म करवाना चाहते हो या कुछ. तो मैं उस वक्त बहुत ज्यादा परेशान थी और मुझे लग रहा था कि बस ये खत्म हो जाना चाहिए. तो दैट वाज अ वेरी
सूदिंग एक्सपीरियंस। मुझे बड़ा सुकून हुआ था। सर ने पूरा प्रोसेस अप्लाई किया और उसके बाद फिर सर ने मुझसे एक चीज पूछी थी कि अच्छा है क्लास, ये जो मुझे अभी तक याद है कि ये कबाब पराठे की धुएं से भी ऐसा होता है, तो मैंने कहा नहीं सर, कबाब पराठे की धुएं से तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो यस, उसके बाद आई जस्ट वैनिश्ड। अब तो व्हेन आई एम ट्रैवलिंग में कह रही हूँ ना, मुझे पता भी नहीं चलता कि किस तरह से वो बहुत अच्छा, बहुत बहुत जबरदस्त टेक्निक थी। और बल्कि हमारे साथ एक और थे, हमारे साथ ही थे सर ट्रेनिंग में, मुझे उनका नाम भी याद नहीं आ रहा, मैं नाम भूल जाती हूँ। तो उन्होंने भी अपनी एक चीज सर से रिमूव कराई थी, वो था कॉकरोच, द फियर ऑफ कॉकरोचेस। और उसके बाद फिर उन्होंने नेक्स्ट डे आके शेयर किया था कि मैंने घर में इतने कॉकरोच मारे उसके बाद। तो हम लोगों की चीजें बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा हेल्प की एनएलपी ने, ये चीजें इस चीज को रेक्टिफाई कर, मतलब खत्म करने में एंड एवरीथिंग। तो बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, बहुत पावरफुल एक्सपीरियंस। बल्कि मैं सोचती हूँ कि कुछ और चीजें थी जो भी मुझे सर से रिमूव करवा लेनी चाहिए थी। सो इंशाल्लाह समटाइम लेटर। Yeah, you know, class मेरे पास I somewhere I still have that video. You know, आपकी उस वक्त हम लोगों ने क्लास की जो वो सेशन किया था, उसकी वीडियो बनाई थी। वो जो हाँ, एलर्जी क्योर वाला आपका पूरा प्रोसेस एलर्जी, था, यस। I have that video. और you know, साथ में उनका जो डॉक्टर साकिब थे, जो उनका जो किया था, उनका भी मेरे पास वो पूरा का पूरा वीडियो somewhere in my external drive I have that. So class, you know, in addition to using NLP in your professional life, personally, you know, mashallah, you have a son. How old is your son, mashallah? So mashallah, he is 5 years old, and I have two sons now. One is Mashallah, mashallah. so much. Yes, One is yes, I remember. 5 months. I'm sorry, one is 7 months, and the older one is 5 years. So yes, this is something that I would really want to share with everybody. Ke NLP is not only a course that you do, is not only a certification, but NLP is an attitude and a behavior that you carry, and it's a huge responsibility. So, and we learn, we grow better with the passage of time. Sir हमेशा एक चीज कहते हैं, the very first person that you do NLP is with yourself. मुझे कुछ वर्डिंग्स हैं जो सर की याद रहती हैं, बिल्कुल मेरे जहन में कहीं स्टक हैं कि ये स्टक नहीं, आई वुड से दे आर देयर engraved in golden words में कि ये, तो the very first person that you do NLP is with yourself. तो आई वुड से कि ये चीज आपको apart from professional life, it helps you a lot in your personal life when you apply that. For example, let's say जब आप when you are in your own home, हम लोग अपने घर में होते हैं being females, so the environment is quite different. And then when we get married, no matter if we are married in the same family, cousin marriages होती हैं, या even if we are married out of the family, तो environment जो है वो अगर 360 डिग्री चेंज नहीं भी होगा, तो वो somewhere around 40%, 20%, 30% चीजें चेंज होती है। लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है। मैरिज इज a huge responsibility. It's not इसको उर्दू में कहते हैं कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है, ठीक है। तो आपको जैसे बहुत चीजें कुछ मैं ऑब्जर्व करती हूँ सोसाइटी में कि अभी थोड़ा सा एक अनफॉर्चुनेटली कॉमन सी प्रैक्टिस है कि लोगों को ऐसा लगता है कि शादी जो है वो बहुत कोई मतलब इट्स अ फैंटेसी, राइट। तो वो फैंटेसी ऑब्वियसली होती है क्योंकि बिल्कुल नई चीजें होती हैं आपके लिए, आपका नया घर होता है, नया लाइफस्टाइल होता है, तो जरूर होती है। लेकिन उसके साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड वंस यू बिकम पेरेंट्स, वंस अ पेरेंट ऑलवेज अ पेरेंट, आपकी अपनी जो पर्सनल लाइफ होती है वो आपको कहीं ना कहीं उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है फॉर योर बेटरमेंट ऑफ योर किड्स, बिकॉज दैट इज अ जनरेशन दैट यू आर रेजिंग। आई मीन हम लोग जनरेशन रेज कर रहे हैं, तो वो एक कोई छोटी मोटी काम नहीं है। वो आप समझे कि 24/7 365 विजिलेंस है, जिसमें आपने पहले अपने आप को करेक्ट करना है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं मुझे ऐसा लगता है उनके पास जो है ना वो बहुत इनविजिबल एंटीनास और कैमरास होते हैं जो आपको हर वक्त ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। आपको भी नहीं पता होता कि आपका वो पैटर्न कितना ज्यादा नोटिस कर रहे होते हैं। समटाइम्स आई मतलब ऐसा होता है कि माय सन स्टार्ट्स इमिटेटिंग मी, तो समटाइम्स आई एम शॉक्ड कि ओ माय गॉड
So this is सब, तो वहां पे जो है ना, मैं पेरेंटिंग के हवाले से अगर मैं बात करूं तो वहां पे एनएलपी ने बहुत सारी चीजों में हेल्प किया। सबसे पहले मुझे ग्रूम करने में, मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक ओवर करने में कि नाउ आई एम अ मदर, एंड एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं इसलिए कहूंगी कि आई एम मदर ऑफ अ मेल चाइल्ड। तो ये कोई आई मीन ये अल्लाह ताला की देन है कि यू हैव अ फीमेल चाइल्ड और यू हैव अ मेल चाइल्ड, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू हैव अ बॉय, if you when you're a mother of a boy, your responsibility is 10 times more, because males are going to take up the families later on। कि अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मर्द के ऊपर रखी है। तो अगर मर्द जो है वो सही होगा और बिल्कुल प्रॉपरली ब्रॉट अप होगा, जितना हम उसको अल्लाह के हुक्म से कर सकते हैं, तो द एंटायर फैमिली इज गोइंग टू बी इन अ वेरी बेटर शेप। जैसे एक हमारे ग्रीन आउट स्पीकर हैं, वो एक टर्म यूज करते हैं, चाइल्ड इन अ मैन्स बॉडी, राइट। तो अगर बीइंग अ मदर मैं अपने बच्चे को, बेटे को ऐसे रेज करूं जिसपे अनफॉर्चुनेटली हमारे सोसाइटी में एक नॉर्म है, लोग इससे बिल्कुल मेरी राय से मुत्तफिक नहीं हो सकते। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है कि अगर एज अ मदर मैं इस चीज पे फख्र करूं कि मेरे बेटे को अपने कपड़े उठाने नहीं आते, जो कि जवान हो चुका है, ठीक है, और उसको वो अपना खाना नहीं बना सकता, वो अपनी चीजें नहीं रख सकता, तो मैं अपनी बहू को इसलिए लेकर आऊंगी कि वो उसके ये सारे काम करे। तो आई थिंक एज अ मदर आई एम अ कंप्लीट फेलियर, ठीक है। और ये चीज मैंने एक दो दफा बहुत क्लोज फैमिली में इस चीज को इसी तरह से स्टेट आउट किया। तो थोड़ा सा जो है वो ऑब्वियसली हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है। आई रियली रिस्पेक्ट दैट। अगेन एनएलपी कहती है कि यू एवरीबडी हैज देयर ओन मैप ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एज अ मदर यू आर अ कंप्लीट फेलियर अगर आपके बच्चे को, क्योंकि ये बेसिक स्किल्स हैं, अगर उसको ये बेसिक स्किल्स नहीं आते तो, और आप उस चीज पे फख्र करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत शर्मिंदगी की बात है। तो ये जो सबसे पहली चीज जो मुझे एनएलपी ने मैंने जो एनएलपी की बहुत सारी हमने बुक्स की, कुछ बुक्स सर ने भी हमें दी थी, वो भी उनसे भी, और बहुत सारी चीजों से हमने जो ये चीजें, और कुछ पेरेंटिंग की क्लासेस भी ली, तो उससे ये चीज अंडरस्टैंड की कि कोर स्किल्स जो है वो मेल हो या फीमेल हो, वो सबको आने चाहिए। और यहाँ पे मैं इस चीज पे इसको और ज्यादा इम्फेसाइज इसलिए करती हूँ बिकॉज माय हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह ही is not dependent upon me. I mean, I am his life partner, but I am not his caretaker के अगर मैं नहीं होंगी तो वो खाना नहीं खा सकते या मैं नहीं, तो ऐसा नहीं है। लाइफ पार्टनर हैज अ वेरी डिफरेंट मीनिंग। तो ये सारी चीजें, हाँ, हम एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं और हमें करना भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि उसमें वो हम डिपेंडेंट हो जाएं बिल्कुल। चलो हस्बैंड एंड वाइफ दे कैन बी डिपेंडेंट और नॉट, लेकिन बच्चे क्योंकि दे हैव टू गो, उनको अपनी अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट सर्वाइवल आना चाहिए। तो एक चीज तो ये हो गई। फिर दूसरी बात आती है एजुकेशन के हवाले से। तो इफ आई टॉक अबाउट दैट, तो आई टॉट माई चाइल्ड फॉर 5 years, आई टॉट हिम माई सेल्फ। I did not have him inducted into any school because religiously भी और वैसे भी it's said कि mother is the first institution of the child। तो उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो मुझे भी अनलर्न करनी पड़ी, और नई चीजों को वर्ड से ना लर्न अनलर्न एंड रीलर्न वाला जो प्रोसेस था वो करते हुए, उसके बाद उसकी जो पूरी बेसिक एजुकेशन है अलॉन्ग विद द कोर स्किल्स, तो वो जो है अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज इन अ वेरी बेटर पोजीशन टू हैव हिम टॉट। I mean, he was a homeschooled child. And I would say that when I went to, alhamdulillah, when I went to have him inducted into the school, so they actually asked me to have him inducted into a later class, मतलब थोड़ी सी बड़ी क्लास में। उन्होंने कहा कि because he is qualified enough. But then again, I actually requested them कि age wise ये जिसमें जा रहे हैं नर्सरी में, तो यू कैन हैव हिम हियर, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि लर्निंग के साथ उसकी जो एंकरिंग हो ना, अब अगेन कोई चीज है एनएलपी है ऑल द टाइम इट्स हियर, तो उसकी जो एंकरिंग हो ना वो बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। तो पॉजिटिव के लिए मुझे ऐसा लगा कि एक उसी क्लास में जिसमें वो एज अप्रोप्रिएट है, क्वालिफिकेशन अप्रोप्रिएट नहीं, एज अप्रोप्रिएट है, वो उसमें जाए, सो दैट वो लर्निंग को प्ले के साथ इंटीग्रेट करते हुए उस चीज को इंजॉय, उस प्रोसेस को इंजॉय करते हैं। तो हम बहुत सारी कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स इस तरह से यूज कर रहे होते हैं, जैसे
एक कॉमन सा पैटर्न है कि पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा वो होता है कि चलो जल्दी से सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है, उठना है। तो वो फिर आप नेगेटिव फीलिंग्स उसके साथ एसोसिएट ऑलरेडी कर रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ दैट हम उस टाइम को इंजॉयबल बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑब्वियसली हम आई हैव अ 7 months ओल्ड चाइल्ड टू। तो उनके साथ बहुत दफा ऐसा होता है कि रात में जागना पड़ता है, कुछ उनके कंसर्न्स होते हैं, छोटे से हैं वो। लेकिन अपार्ट उसमें फिर अगेन वही चीज आ जाती है कि मुझे आई एम द एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर, सो आई एम द वन हु हैज टू बी एनर्जेटिक। मुझे अपनी वो रिसोर्सेज एक्सेस करनी है। तो हम उस टाइम को इंजॉयबल बनाते हैं, थोड़ा अर्ली उठ जाते हैं। देन वी हैव द कार्टून टाइम एंड समटाइम्स वी हैव द प्ले टाइम, समटाइम इट्स क्रिकेट। तो सुबह के टाइम में इसको इतना हैपनिंग। और फिर उस उनका मतलब इट्स नॉट कि आप कोई बहुत एक्सेप्शनली चीजें करें, लेकिन छोटी छोटी चीजें करते हुए उस चीज को आप बिल्कुल उस टाइम को इंटायरली चेंज कर सकते। तो ग्लूमी बनाने के बजाय फिर लंच को फैसिनेट कर दिया कि हम आज ये कुक कर रहे हैं, या बाबा ये कुक कर रहे हैं, या मम्मा ये कुक कर रही है। तो वो चीजें जो है वो बड़ी उनके लिए न्यू हो जाती है। फिर हेल्दी फूड है, क्या है, किस तरह से पूरा टाइम को ना एक एंजॉयबल टाइम बना के फिर जब बच्चा स्कूल जाएगा तो ऑब्वियसली उसके लिए वो उस वो एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में रहेगा। उस कंफर्टेबल उसके साथ फिर उसको पढ़ना कोई इतना बड़ा उसको मतलब अल्लाह ना करे हैसल नहीं लगेगा, बल्कि उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रोसेस होगा। तो और फिर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स के साथ मतलब हमेशा टुवर्ड्स द गोल उसको रखा कि हमें ये चीज लर्न करनी है। क्यूरोसिटी बिल्ड की, एक्साइटमेंट डेवलप की। मतलब इस तरह से नहीं कि आज आज हमें ABCD पढ़ेंगे, नहीं, मतलब लेट्स एक्सप्लोर। अच्छा कि लेट्स एक छोटी सी टेक्निक थी कि उनको जैसे अभी पीछे शायद बैकग्राउंड में नजर आ रहा होगा, थोड़ी सी बुक्स हैं ये मेरी। तो इस कलेक्शन में वो छोटे थे तो रूम में आना आते थे और उनको बहुत शौक था किताबें देखने का। तो उनके हाथ से किताबें छीनी नहीं कभी, बल्कि क्यूरोसिटी इंड्यूस करी कि अच्छा आपको समझ में आ रहा है क्या लिखा है। नहीं मम्मा मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो कैसे समझ में आएगा, हमें कैसे आया, तो हमें पढ़ के आया। कैसे आप पढ़ना चाहते हो, आप भी सीखना चाहते हो। इसमें इतनी मजे की स्टोरीज होती कि मेरे फादर ने जो है वो बहुत ज्यादा हम लोगों को उन्होंने इस तरह से रखा था कि बहुत सारी स्टोरीज ला के देना। तो हमने सिर्फ करिकुलम, हमने कभी भी कोर्स बुक्स नहीं पढ़ी सिर्फ, मुझे ऐसा लगता है बल्कि कोर्स बुक्स के अलावा सब कुछ पढ़ा। तो वहां से वो चीज थी, तो वही उसी तरह से और फिर अपनी प्रैक्टिस को लेते हुए तो वहां पे पेरेंटिंग में इस चीज ने हमें बहुत हेल्प की टुवर्ड्स द गोल बच्चे को लेके जाने में कि किस तरह से सेट करना है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव कंपटीशन से दूर रखना। जो सर ने मुझे याद नहीं है कि हमारी कौन सी ट्रेनिंग का पार्ट था, लेकिन सर हमेशा एक चीज कहते थे कि जो सिबलिंग राइवलरी होती है वो क्रिएट ही इस तरह से होती है, या एक जो हम उसको कहते हैं कौन सा स्कार्सिटी माइंडसेट है। तो वो क्रिएट कहाँ से होता है, वो यहीं से क्रिएट होता है कि जैसे जब माँ अपने बच्चे को कहेगी कि खा लो वरना भाई खा लेगा, खा लो वरना बहन खा लेगी, जल्दी से कर लो वरना दूसरा बच्चा जीत जाएगा तुमसे। तो उस चीज को अल्हम्दुलिल्लाह वी वर एबल टू एलिमिनेट कंप्लीटली, बल्कि इंड्यूस ही नहीं कहता लेकिन एक्सटर्नल जो भी इन्वायरमेंट से आता है तो वो नेगेटिव कंपटीशन को वो करते हुए। बल्कि एक चीज सर ने हमेशा शेयर की थी कि जब आप सर ने बताया था कि जब सर का कोई भी बच्चा कोई चीज में सक्सेसफुल होता था या किसी एग्जाम में, तो वो सेलिब्रेशन सबके लिए होती थी, वो गिफ्ट सबके लिए आते थे, सबके लिए एक जैसी चीजें होती थी। तो बिल्कुल उसी तरह से उसको जो है वो इनके छोटे भाई के साथ भी और फिर वो ही इज माशाल्लाह वेरी हेल्पिंग हैंड। तो वहां भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये चीज बिल्कुल भी फेस नहीं करनी पड़ी कि उसमें कोई नए बच्चे से जो जेलेसी हो, या क्योंकि उसको मैंने हमेशा एंगेज करके उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देके कि ही इज योर ब्रदर, ही इज योर्स। तो उसकी ओनरशिप वहां पे लाके और फिर अब जैसे स्कूल में समटाइम्स कहीं ना कहीं से आता है कि मम्मा उसका काम मेरा ज्यादा अच्छा था, या तो उसको फिर हम इस तरह से कर रहे होते हैं कि ठीक है अगर आपका ज्यादा अच्छा था तो ज्यादा अच्छा तो तब होगा ना जब सारे बच्चों का ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आपका जो ज्यादा अच्छा है वो आप दूसरे बच्चों को भी सिखा दें। वहां से जो है ना वो फिर हम नेगेटिव कंपटीशन से दूर करके कोलैबोरेशन की तरफ आते। तो ये कुछ चीजें हैं। एक्सेलेंट, यू नो इट्स लाइक आपकी बहुत सी बातों में मुझे इट्स लाइक मेरी माशाल्लाह 5 बहन है, बट माय मदर रेज्ड मी as if like I am responsible for things in my life. So I remember even मेरे वालिद के इंतकाल के बाद I had just turned 18 जब मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ, और कुछ महीनों बाद मेरी बड़ी बहन का रिश्ता आया। तो मेरी अम्मी ने जो है ना, मैं बैठा हुआ था वहां पे,
और वो लोग रिश्ता लेकर आए हुए थे ससुराल वाले, मेरी अम्मी ने मेरे कंधे पे हाथ लगे, इससे बात करें। आई वाज लाइक okay, I was like 18. Okay, मुझे कॉलेज के एडमिशन फॉर्म फिल करना भी अभी सही नहीं आते थे, और वो मुझे बहन के रिश्ते के लिए गए। लेकिन it's the mother plays a major role, and अभी आप लोगों ने गौर किया नहीं किया हो, मगर मुझसे अगर कोई पूछे कि एनएलपी से मुझे पर्सनली क्या फायदा हुआ है, तो मैं एक बात कह सकता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी किसी हद तक शऊर के साथ जीता हूँ। और जो जो अभी सारी बातें इखलास ने कही हैं, ये इस चीज की इंडिकेशन है कि इवन पेरेंटिंग भी जो कर रहे हैं शऊरी तौर पे कर रहे हैं। बच्चा पल नहीं रहा है खुद ब खुद, बल्कि उसको पाला जा रहा है। ओके, बच्चा खुद ब खुद ग्रो नहीं हो रहा कि बस वो कार्टून देख देख कर और अम्मा के दुखड़े देख देख कर, बल्कि पेरेंट्स, जिंदगी में हर एक के साथ चैलेंजेस होते हैं, हर एक के साथ प्रॉब्लम्स होते हैं, रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम्स होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स इंसानों के दरमियान होती हैं, मिसकम्युनिकेशन इंसानों के दरमियान होती है, फैमिलीज में आपस में डिफरेंसेस होते हैं। दीज आर नॉर्मल थिंग्स इन लाइफ। इसका किसी माशरे से, किसी मजहब से, किसी इलाके से कोई ताल्लुक नहीं। हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को देख रहे होते हैं और हम अपनी प्रॉब्लम्स पे फोकस कर रहे होते हैं, और हम समझते हैं सारी प्रॉब्लम्स हमारे ही साथ हैं, दूसरे सारे बड़े ऐश में। ओके, लेकिन अगर हम गौर करें तो इस दुनिया में हर हर इंसान को कोई ना कोई चैलेंज होता है। जो जो अभी इखलास ने सारी बातें कही हैं, दिस इज एन इंडिकेशन कि ये कॉन्शियसली एफर्ट कर रहे हैं। एज अ मदर शी इज कॉन्शियसली मेकिंग एन एफर्ट, एंड दैट इज व्हाट रियली काउंट्स। इफ यू आर अ मदर और योर फादर, जो जो भी इखलास ने बात बताई, आई हैव डन दिस मेरे बच्चों के साथ। जब मेरी बेटी का रिजल्ट आता, तो अगर मेरा बजट होता 1,000 रुपए कि मैं उसको 1,000 रुपए में कुछ दिलाऊं, तो बजाय मैं 1,000 रुपए में उसको दिलाने के, मैं 250-250 रुपए के चारों बच्चों को कुछ दिला देता। सोमेंगे जी, उसका अच्छा रिजल्ट आया, सो वी विल सेलिब्रेट, सो एवरीवन विल गेट समथिंग। तो इस तरह से बच्चों में आपस में कंपटीशन खत्म हो, ताकि बच्चों में आपस में एक अंडरस्टैंडिंग, एक मोहब्बत बढ़े। हमारे यहाँ तो बहन भाइयों में आपस में भी कंपटीशन करवाए जाते हैं, उसके बाद चचा के बेटे और खाला के बेटे और मामू का बेटा और पुप्पी का बेटा, और उसके अंदर आपस में कजन्स में कॉम्पिटिशन्स चलते रहते हैं। और पेरेंट्स अपनी अना के आगे अपने बच्चों की जिंदगियां कुर्बान कर देते हैं। ओके, दैट्स सैड और अनफॉर्चुनेट चीज है, मगर अगर आप गौर करें हमारे माशरे में ये बड़ी आम चीज है। मैं जाती तौर पे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बच्चों को अच्छे स्कूल में डलवाने की वजह ये नहीं थी कि उनको बच्चे के फ्यूचर में कोई इंटरेस्ट था, बल्कि अच्छे स्कूल में डलवाने की वजह ये थी, मिसाल के तौर पे भाई का बेटा फलाने महंगे स्कूल में पढ़ता है, तो मेरा बेटा भी किसी महंगे स्कूल में पढ़ेगा, इवन दो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मुझे पढ़ाई में कोई शौक नहीं है, लेकिन कहीं दावत में जाते हैं तो वो जिक्र आता है कि जी उसका बेटा फलाने स्कूल में, तो मैं कैसे चुप रहा हूं कि जी मेरा बेटा छोटे स्कूल में। सो पेरेंट्स का जो फोकस है वो एजुकेशन पे नहीं है, बच्चे की तरबियत पे नहीं है, अपनी अना की तस्कीन पर है। और ये जुल्म हमारे यहाँ बेहिसाब घरों के अंदर हो रहा है। इसके नताइज हम आए दिन देखते रहते हैं। आई होप इखलास की बातों से आपको ये कुछ अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हुई होंगी। जो इखलास ने भी बातें की, and notice that she's a very fine teacher, by the way. How much detail she gives you about everything, and she's like literally pouring her heart out to you, and sharing so much with you. So thank you very much, Ikhlas. uh, just a couple of more questions. Do you take clients, like do you work with people, if somebody wants to contact you, do you take individual clients as well? Yes, sir, with especially in the language teaching, English language, business English हो गई, या communication की classes हो गई, कुछ public speaking के sessions हो गए, confidence building के हो गए, IELTS के हो गए, तो yes, I individually भी ले रही होती हूँ, और mostly उसको online भी ले रही होती हूँ, क्योंकि professionals होते हैं तो उनके लिए commute करना थोड़ा सा एक issue होता है। तो बिल्कुल they can log into my website, it's www.rslanguages.com। अगर वो होगा तो मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी। इसके अलावा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर है, वो भी शेयर कर दूंगी, तो दे कैन ऑब्वियसली कॉन्टेक्ट मी। और अकॉर्डिंगली, क्योंकि उसमें एक चीज, चाहे वो मेरी लैंग्वेज की क्लासेस हो या डिफरेंट ट्रेनिंग्स हो, तो उसमें इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो ये है कि फर्स्ट मैं उनसे एक डेमो सेशन लेती हूँ उनके साथ,
ठीक है, लेट्स सपोज अगर कोई मेरे पास आया है और उसकी आई वुड से उसको इंग्लिश के ग्रामर या उसकी अपनी कंफ्यूजन ये है कि उसको राइटिंग में ग्रामर पे फोकस करना है या सेंटेंस स्ट्रक्चर पे फोकस करना है। एक एग्जांपल है, ये जस्ट एन एग्जांपल। तो तब भी आई प्रेफर इट्स अ प्रैक्टिस दैट आई टेक देयर डेमो क्लास फर्स्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर नीड। आई मीन वो वन साइज फिट्स ऑल वाली चीजें नहीं। एक जेनेरिक कोर्सेज तो ऑब्वियसली डिजाइंड होते हैं, जैसे एक है इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम ELTP के नाम से है, फिर BCP हो गया, इस तरह के 5-6 कोर्सेज और हैं। लेकिन फिर उसमें मैं मॉडिफिकेशंस करती हूँ कि लेट्स उनकी उस पर्टिकुलर इंसान की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, किसके ऊपर काम करना है और उसको क्या चीज इंप्रूव करनी है, तो उस पे हम जो है ना वी आर वर्किंग। एंड समटाइम्स इट हैपेंस कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड टीचिंग तो उसमें भी चीजें जो है ना वो अमेंडमेंट देन एंड देयर भी हो रही होती है। लेट्स सपोज हमें लगता है कि एक चीज में हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाना है तो हम उस पर ज्यादा, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि क्वालिटी इज समथिंग दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और बीइंग अ ट्रेनर एंड बीइंग अ टीचर मेरे पास मेरी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई एम आंसरेबल टू अल्लाह कि if a person was sent to me, so did I justify my part or not? तो मेरे लिए मेरी क्रेडिबिलिटी भी बहुत जरूरी है कि मैं जब किसी को पढ़ा के निकलूं तो मैं मेरा अपना कॉन्शियस जो है वो बहुत सेटिस्फाइड होना चाहिए, कि मुझे पता होना चाहिए कि मैंने वैसे मुझे बैक देन जब मैं आंगन कॉलेज में थी तो मेरे साथ एक कोलीग थी, माशाल्लाह वो बहुत सीनियर थी और वो हमारी टीचर भी रह चुकी थी। तो उन्होंने मुझे एक कमेंट दिया था कि क्लास जब क्लास से निकलती है तो ऐसा लगता है कि दुनिया फतह करके निकल रही है। तो वो वाली जो है ना वो फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर वो वहीं आती है कि जब मैं उस चीज को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ओन करूँ, बिकॉज अगेन अल्लाह हैज सेंड दैट पर्सन टू मी ना, तो मेरी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बिल्कुल पीपल कैन कांटेक्ट मी। सो मैं डिस्क्रिप्शन में इखलास का नंबर कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दूंगा। एंड जस्ट इखलास अभी बात कर रही थी तो मैंने उनकी वेबसाइट जो है वो सर्च करके सो आई एम जस्ट शोइंग यू हर वेबसाइट, यू नो दिस इज rslanguage.com। सो यहाँ पर आपको इखलास की सारी डिटेल्स भी मिल जाएंगी, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, सो यू कैन कॉन्टैक्ट हर एंड इखलास से आप डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। I hope that will be very fruitful for you. Now, Ikhlas, a question I always ask people: how has NLP impacted you? Sir, in every way. In every way. I mean, NLP has impacted me a lot. यहाँ एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगी। In my early teenage years, मुझे क्योंकि हम बहुत सारा लिटरेचर पढ़ते थे तो उसमें इस्लामिक लिटरेचर भी बहुत ज्यादा पढ़ने में आया, मुताला रहा। तो लिटरेचर और प्रैक्टिसेस जो सोसाइटी में है, जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं, कहीं कहीं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस था। इट वाज अ ह्यूज ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो जब आप टीनेजर होते हैं तो आपके जहन में बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त बहुत ज्यादा कश्मकश होती है, बहुत ज्यादा सवालात होते हैं एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन बिकॉज आप बिल्कुल एक चाइल्डहुड से एडोलेसेंस में जा रहे होते हैं। वो एक ट्रांजिशन फेज होता है। तो उस वक्त जो है ना वो एक, इसमें उर्दू की एक टर्म होती है गुंजलक हो जाना, दिमाग में वो अजीब सी चीजें बन जाती हैं। तो वो चीज ना बड़ी कंफ्यूजिंग थी, क्योंकि एट दैट टाइम जब मैं चीजें स्टडी करती थी और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होता हुआ नहीं देखती थी, तो क्वेश्चंस होते थे तो उस क्वेश्चंस को समटाइम्स केटर हो जाते थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो केटर नहीं होते थे। बीइंग अ फीमेल हमारी सोसाइटी में एक तो क्वेश्चन करना और किसी भी सोसाइटल नॉर्म को चैलेंज करना, वो आप समझिए कि इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। सो मल्टीपल टाइम्स आई मीन बहुत सारी चीजें ऐसी अनक्लियर रह जाती थी, या रिस्पॉन्स में बहुत दफा ये होता था घर के जो भी बड़े होते हैं कि ये ऐसा ही होता है और ये ऐसी ही प्रैक्टिस है और ऐसा ही होता है सोसाइटी में। तो मेरा हमेशा क्वेश्चन होता था कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक चीज जो अल्लाह ने कह दी है, अल्लाह ताला ने फरमा दी है, तो उसके अगेंस्ट अगर कोई चीज हो रही है तो वो क्यों हो रही है और वो
क्यों होती रहे और हम उसको क्यों प्रैक्टिस करें। फिर हम में और उन कौमों में तो फर्क नहीं रह गया ना, जो कहते थे कि हमारे बाप दादा भी वही करते आए थे तो हम भी वही करेंगे, चाहे हमें चीज समझ आ रही है तब भी। तो ये चीज बड़ी एक यहाँ हुआ। उसके बाद मेरे साथ एक अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस ये हुआ कि राइट आफ्टर इंजीनियरिंग मैंने कुछ टाइम के लिए, देयर वाज अ नियर बाय स्कूल, आई डोंट वांट टू नेम इट, बट आई वेंट फॉर टीचिंग देयर एंड इट्स क्वाइट रिलीजियस स्कूल। तो वहां जो चीजें थी ना, वो आप समझे कि इट वॉज अ कंप्लीट डिजास्टर। मैं बिल्कुल इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगी, इट वॉज अ कंप्लीट डिजास्टर बिकॉज देयर वाज अ कॉल और फेल में एक बहुत बड़ा तजाद है, ह्यूज 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 कोलोसल डिफरेंस जिसको कहते हैं। ठीक है, वो देयर वाजंट अ सिंगल एलिमेंट ऑफ प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच। तो वो चीज ना वहां से आप समझे कि वो मुझे अल्लाह ना करे, लेकिन मैं कहती हूँ मेरी बहुत बड़ी, आई एम ब्लेस्ड कि, और अल्लाह ताला मेरे फादर को बहुत इस चीज का अजर दे कि उन्होंने मुझे, क्योंकि मेरे कंसर्न्स थे एनएलपी की ट्रेनिंग से रिलेटेड भी, मैं बिल्कुल इस चीज को शेयर करूंगी क्योंकि इट वाज अ 10 डेज ट्रेनिंग जो प्रैक्टिशनर लेवल था, और 10 डेज की फुल डे ट्रेनिंग थी। और मैं इस चीज को लेके बहुत कंसर्न थी कि मतलब फुल डे की ट्रेनिंग अगर वो बोरिंग हुई तो क्या होगा, कैसे सरवाइव करेंगे। अब मैं बिल्कुल भी सर को उस वक्त नहीं जानती थी, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो मेरे फादर ने मुझे कहा था कि अच्छा जाके देखो, तो मजा आए तो कर लेना, नहीं आए तो नहीं कर। और वो 10 दिन कहाँ गुजरे, कैसे गुजरे, कुछ नहीं पता। मतलब बस वो वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ माय लाइफ, वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स ऑफ माय लाइफ। तो उस वक्त जो है ना, जब मैं उस आफ्टर मुझ में वहां से उस जगह से इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी, और मैं रिलीजन से इतना दूर हो गई थी, इस कदर डिफरेंसेस थे कि मैं उसके बाद जब सर की उसमें आई तो मैं हमेशा बहुत सारे लोगों को, मैंने, मुझे नहीं पता मैंने सर को ये बात बताई है या नहीं, लेकिन आई टोल्ड अ लॉट ऑफ पीपल के अल्हम्दुलिल्लाह सर ने रिलीजियस चीजों को जिस तरह से इंटीग्रेट किया एनएलपी के साथ, तो मुझे आप समझे कि 99% जो सवालों के जवाब थे वो मिल गए। और मेरी जो लॉजिक्स थी ना, उनको वेरिफिकेशन मिल गई कि नहीं। तो वहां से वो चीज बिल्कुल वो हो गई कि नहीं, इट्स नॉट कि हम अगर एक भीड़ चाल है तो हम उसी में चले जा रहे हैं, तो नहीं तो फिर हम डिफरेंस कैसे क्रिएट करें। हम जरूरी नहीं ना कि हम लड़ झगड़ के करें, हम रिस्पेक्टफुली भी चीजों को कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा आप समझिए कि मेक शिफ्ट था। अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर वो चीज नहीं होती तो गॉड नोस कि मैं इस वक्त कहाँ होती, और मैं मेरा क्या माइंडसेट होता, और मेरा आई वुड से कि किस तरह का लिबरलिज्म होता है या क्या होता है। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो, लिटरली मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। क्योंकि मैं जब वो कहते हैं ना कि आपके पास हर एक आइकन होता है। जैसे एनएलपी की बात करेंगे तो हमारे पास कुछ लोग हैं जिनको हम देखते हैं, हम मतलब सर हैं, उसके बाद फिर आगे हायरार्की है, डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर हैं, तो आपको वहां से वो चीजें नजर आती हैं, उनकी उनकी बॉडी लैंग्वेज में, दे आर एनएलपी देमसेल्व्स। तो रिलीजियस वाइज अगर बात करें ना, तो मुझे इस कदर शॉक लगे थे कि मेरे लिए जो है ना बहुत मुश्किल था चीजों को एक्सेप्ट करना। और बड़ी नेगेटिव जो है ना वो मेरे पास उसको लेके जो है ना वो चीजें थी। वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, वो इम्पैक्ट था। और उसके बाद मेरी आई वुड से कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ में तो मेरा जो सक्सेस अल्हम्दुलिल्लाह था, है और हो रहा है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है। लेकिन अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं तो मेरी बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हुई, बहुत सारी चीजें आई वुड से कि वो कभी इरप्ट ही नहीं। जो नॉर्मल अगर मैं मैरिटल लाइफ की बात करूं तो कपल्स में जिस तरह के इश्यूज होते हैं, जिस तरह की चीजें क्रिएट होती है, तो एक तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से हमने अपनी क्लासेस में चीज पढ़ी थी और उसको फिर इम्प्लीमेंट भी किया कि ऑब्वियसली कि एक पर्सन है जो एक बाय डिफॉल्ट कहेंगे क्या किस तरह से कि वो ऑडिटरी उसमें काम कर रहा है, दूसरा पर्सन है जिसका मेजर रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम जो है वो विजुअल है। तो वो काफी चीजें वहीं से जो है ना वो थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। सर ने एक कपल का डिस्कस भी किया था कि उन्होंने, उनकी डिवोर्स हो गई थी इसी वजह से कि उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बेसिक लेवल्स पे नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है उसमें, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो लगता है कि लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा इशू है, वो कभी इशू लगा ही नहीं। क्योंकि वहां से एक बेसिक चीज अंडरस्टैंड की, वो ये कि एवरीबडी हैज देयर ओन परसेप्शंस and they are operating from different mindsets, they are brought up into different environment, they have had different experiences. तो yes, being husband and wife, हम लोग उन चीजों को बहुत ज्यादा
अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, उन चीजों को जो कोई ऐसा लगता है कि जी ये मतलब पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंस है, तो उसको बहुत लॉजिकली डिस्कस कर रहे होते हैं। और एक्सेप्टेंस आ गई ना एनएलपी के बाद, बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस इस सेंस में आ गई कि कहीं कहीं वो जो एक ईगो वाला एलिमेंट होता है ना कि नहीं मेरी बात सही है, तो उसकी बजाय वो आ गया कि मतलब व्हाट इज देयर फॉर मी टू लर्न इफ समथिंग हैज हैपेंड, और इफ समबडी हैज अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो मेरे लिए उसमें क्या लर्निंग है क्या। तो वहां से मैं यही कहूंगी कि आपका अंदर तो आपका नहीं वो कंफर्ट जोन टूट रहा होता है कि नहीं नहीं हमारी ये चीज ही सही है वो, लेकिन फिर जब आप उस चीज को ओवरकम करते हुए उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि नहीं अगर अगले की बात फ्रूटफुल है और वो हमारे लिए ही है, तो मतलब यू ग्रो एज अ पर्सन। तो बहुत बहुत वास्ट चेंजेस रहे, बहुत सारी चीज। उसके बाद फिर एक चीज और आ गई कि जैसे डिसोसिएशन जिसे कहते हैं कि अगर कोई नेगेटिव इवेंट हो रहा है फैमिली में, कोई इस तरह की चीज हो गई है या कुछ भी, तो आप उसको उससे अपने आप को डिसोसिएट करते हुए मतलब एसोसिएट ना रखें ना उन फीलिंग्स को। फिर अगर हम उन्हीं फीलिंग्स को सोचते रहेंगे उन्हीं सारी चीजों को, तो फिर हम उन्हीं में उसी में रह जाएंगे ना। तो हम वहां से उसको ब्रेक करके पैटर्न इंटरप्ट करके अपने आप को डिसोसिएट करके एंड हाउ टू associate yourself with something good and how to focus on your own domain, आप जिसमें हम काम करें उस तरह। तो वो obviously it comes with a lot of practice, क्योंकि एवरी टाइम हमें जो है ना वही हम वापस जा रहे होते हैं कि ये हो गया क्या होगा, इस ये ऐसा हो गया वैसा हो गया ये। तो फिर बहुत सारी चीजें जो है ना वहां से प्रैक्टिस के साथ आती है। जैसे ही हम डिसोसिएशन पे आते हैं, डिसोसिएशन टेक्निक मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। तो वो वहां पे इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल, और हर वे में जो है ना एनएलपी ने इम्पैक्ट किया मुझे। मैं सबको रिकमेंड करूंगी कि एटलीस्ट वो एनएलपी प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग तो जरूर जरूर करें, और उसको प्रैक्टिस भी जरूर करें, क्योंकि अगेन वही चीज है ना कि सर्टिफिकेट लेके रख देंगे तो एनएलपी खुद से कुछ भी नहीं कर सकती, हमें खुद से करना पड़ेगा। लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो एंड वंस आपकी रेपिटेशन इज द मदर ऑफ स्किल, ये भी सर का एक सेंटेंस है जो मुझे बिल्कुल रटा हुआ है। तो आप जितना उसको कर रहे होते हैं वो फिर आपका अनकॉन्शियस पैटर्न बनता चला जाता है, और वो फिर उसी तरह से जो है ना फिर आप उसको इतना अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं कि आपको पता भी नहीं चल रहा क्या अच्छा हम मतलब इस सिचुएशन में एक नॉर्मल इंसान मतलब अल्लाह ना करे हम कोई नॉर्मल नहीं, लेकिन एक कन्वेंशनल मैनर में एक इंसान ये करता है और हमने ये कर दिया। तो लोगों को भी लगता है कि अरे मतलब समटाइम्स ऐसे जेस्चर्स होते हैं कि दे डिड नॉट एक्ट एट ऑल। तो अगेन वही वाली चीज है ना कि हु इज इन कंट्रोल ऑफ योर फीलिंग्स। मतलब अगर हम किसी वर्क प्लेस पे है, हमने किसी को ग्रीट किया और उसने हमें बहुत अजीब तरीके से जवाब दिया, तो अब हम उसमें अगर हम ही ग्रम्पी हो जाएंगे और बहुत ज्यादा सैड हो गए या बहुत अजीब से हो जाएंगे, तो फिर अगेन हु इज इन कंट्रोल ऑफ योर फीलिंग्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड बी द वन हु शुड बी इन कंट्रोल ऑफ आवर फीलिंग्स, because we have to produce the results that we want to achieve. Nobody else is going to do that. Excellent. Thank you very much, Ikhlas. Thank you for sharing all of that. And you're very right. Actually, it's been 27 years, more than 27 years since I'm teaching. लेकिन मैंने अभी more recently मैं एक चीज जो देख रहा हूँ, लोगों का जहन जो है ना वो एक सर्टिफिकेट्स के पीछे भाग रहे हैं. It's like certificate, and then this certificate, they don't have skills. They have a certificate. मैंने इनफैक्ट इट्स लाइक एनएलपी स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग मैंने कराई थी, उसमें उसकी कंडीशन ये थी, देयर इज नो सर्टिफिकेट फॉर दिस ट्रेनिंग, दिस इज फॉर पीपल हु वांट टू लर्न एंड एक्सपीरियंस दिस एंड प्रैक्टिस दिस एंड मास्टर दिस. वो अपने आप को बेहतर नहीं बनाना चाहते, वही ईगो में फंसे हुए, just showing those certificates. So thank you, class, thank you very much for being my guest today. इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी. इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान आया तो जरूर आपसे मुलाकात होगी. डॉक्टर साहब को मेरा जरूर सलाम बोलिएगा. एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस टुडे. एंड इंशाल्लाह ताला वी विल कम अगेन लाइव. में इखलास के जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं मैंने उनकी वेबसाइट वैसे शेयर की थी पीछे, लेकिन मैं उनकी जो कॉन्टैक्ट की डिटेल्स हैं इखलास जो मुझे देंगी तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. यू कैन कम्युनिकेट विद हर, यू कैन कॉन्टैक्ट हर, एंड इंशाल्लाह ताला फिर आप इखलास से मजीद तफसीलात जान सकते हैं. सो वी विल कॉल द सेशन ऑफ नाउ.
मुझे हमेशा उड़ते परिंदे बड़े पसंद आते हैं and I have this feeling that you give me the wings to fly. And Now I think मेरी boundaries जो मैंने बनाई हुई थी, जो limitations मैंने बनाई हुई थी, I can't see them now. ये जो beliefs जो चीजें रोकती थी limited, they just go tish, नहीं, no more. अपने कॉन्फिडेंस के अंदर एक बहुत ज्यादा बूस्ट देख रहा हूँ और यूनिकनेस कमरान भाई की ट्रेनिंग्स में है वो ये है कि व्हेन यू गो थ्रू दिस ट्रेनिंग्स ड्यूरिंग द ट्रेनिंग्स ही आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है It's that profession that gives you the ability to help people transform their lives.